Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Love You Shakespeare series, and today we will start a new play, that is The Tempest. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. Good evening, Vedvyasji. Welcome. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. And these are the timings of your classes: Monday to Friday at 8:30 p.m., Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so let's start. Today we will read The Tempest, the detailed summary of The Tempest. Today is the first part of the video. So first of all, let's learn about the play. The Tempest was probably written in 1610 11 के बीच में लिखा गया था, and it is one of the last plays of Shakespeare. That is why it is very significant. After completing the plot summary, we will also analyze some of the critical aspects of the play, like Prospero's character, Caliban's character, and the theme of colonialism which is there in that work. We will also discuss them. It was listed in the first folio, and it is a play about magic, betrayal, love and forgiveness. So these are the main themes of the play. And इसका setting कहाँ पर है? An island near Italy. An island near Italy, that is the main setting of the play. Okay, so let's start with the plot summary. Today we will discuss the summary of two acts. Okay, Act 1 and Act 2. Good evening, Rajkishore. Welcome. So Act 1, Scene 1 की हम बात करेंगे first of all, जिससे play start होता है. So as the title mentions, it is about the tempest. So the play also starts with a terrible storm, a terrible sea storm, and the major character appears in the first scene. तो एक ऐसा सीन है कि एक टेम्पेस्ट अराइज हुआ है एंड अ शिप इज रिटर्निंग फ्रॉम ट्यूनिशिया. उस शिप में कौन कौन है? अलोंसो, किंग ऑफ नेपल्स एंड हिज कोटियर्स. ठीक है, सो किंग एंड हिज कोटियर्स, दे आर रिटर्निंग होम इन अ शिप फ्रॉम ट्यूनिशिया. एंड ट्यूनिशिया में एक्चुअली क्या था? अलोंसो's डॉटर्स वेडिंग सेरेमोनी. Alonso's daughter's wedding ceremony. So after completing that ceremony, they are returning back to Naples. And बीच में उन्होंने ये storm को face किया. Good evening, Varsha. Welcome. The sailors ordered the passengers to go below the deck for their safety. So obviously, when the tempest arises, it becomes very difficult to combat with the tempest. So the sailors, thinking about the safety of the passengers, they order everyone to go below the deck. Now an important character appears, जिसका नाम है Gonzalo. Gonzalo is the counselor of the king, and Gonzalo very boldly declares that he is not afraid of drowning, and he is there to protect everyone. By giving his own life, he is also ready to give his own life. He is not afraid of drowning. अच्छा, पटना में एग्जाम है कल. ओके, तो चलो, all the very best to all of you. So Gonzalo, the counselor of the king, declares that he is not afraid of drowning. Antonio and Sebastian, they are furious. Why they are furious? Because there is a kind of conflict or difference of opinion Gonzalo के साथ उनका चल रहा था. So they are furious with all these things. And finally, what happens? That the ship breaks down. The ship gets destroyed. Antonio and Sebastian run with the king. एंड गोंजालो प्रेज फॉर सेविंग हिमसेल्फ. ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट एक्ट 1 सीन 1. तो स्टार्ट्स विद अ वेरी टेंशन सिचुएशन, टेंस्ड सिचुएशन.
ठीक है, तो इससे प्ले स्टार्ट होता है। नाउ एक्ट 1 सीन 2 में क्या है, नेक्स्ट सीन में वी आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। टू मेजर कैरेक्टर्स, वन इज प्रोस्पेरो एंड हिज डॉटर मिरांडा। ठीक है, so Prospero and his daughter Miranda, they watch the tempest from a distance, and now we can realize what is the main purpose of the tempest, or how is that caused. So Miranda thinks that it is created by her father's magic, because Prospero was a good magician. And देखो, Prospero नाम का एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है। Prospero means one who prospers, right? तो prosperity के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन है Prospero। तो Prospero is an ambitious man and he is a very good magician. तो मिरांडा believes that अचानक ये जो टेम्पेस्ट अराइज किया है, इसके पीछे उनके पापा के हाथ। So Miranda requests Prospero to stop it because it is destroying everything. It is dangerous for the innocent passengers. So Miranda requests Prospero that please stop the tempest, because she feels pity for the voyagers. They are facing so much difficulties because of her father. She cannot accept that. ठीक है, तो नाउ प्रॉस्पेरो रिवील्स द ट्रूथ कि वो क्यों ये टेम्पेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो मिरांडा को बता रही है। एंड दैट इज हाउ वी आर इंट्रोड्यूस टू द फ्लैशबैक ऑफ द स्टोरी। ये जो एलोन्सो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, ये कैरेक्टर्स कहाँ से आए, प्रॉस्पेरो का ये हाल कैसे हुआ, तो इसके पीछे का स्टोरी हम अभी जान रहे हैं। तो प्रॉस्पेरो एक्सप्लेन्स एवरीथिंग एंड ही सेज दैट ही वाज अर्लियर द ड्यूक ऑफ मिलन। ठीक है, he was also the duke, and in that sense Miranda was the daughter of the duke, तो बहुत ही ऊंचे हायरार्की में उनका पोजीशन था। but he was greatly engrossed in magic was his passion। ठीक है, now taking that advantage of his extreme interest in magic, his brother Antonio took the charge of the state affairs। so his brother is trying to capture the whole situation, and actually Antonio को Prospero ने ही responsibility दिया था कि I am busy in magic in my own world, so you can continue the stately duties or all these things। ठीक है, बट एंटोनियो इस अपॉर्चुनिटी का एक गलत इस्तेमाल किया। एंटोनियो प्लान्स टू ओवरथ्रो प्रॉस्पेरो, टेकिंग द हेल्प ऑफ हिज एनिमी एलोन्सो। तो एलोन्सो, जिसको हमने अभी बताया किंग ऑफ नेपल्स, ही इज एक्चुअली एन एनिमी ऑफ प्रॉस्पेरो। एंड एंटोनियो ने क्या किया, एंटोनियो डिसाइड्स टू ओवरथ्रो प्रॉस्पेरो इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, बिकॉज ही इज नाउ वेरी मच इंटरेस्टेड इन मैजिक एंड ही हैज very little knowledge about what is going on in the country। So this is the best time to overthrow Prospero and take the whole power। So Antonio takes help from his enemy Alonso। ठीक है, they kidnapped Prospero and Miranda and left them amidst the sea with a defective boat। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एलोन्सो एंड एंटोनियो ने deliberately they kidnapped Prospero and Miranda and they almost vanished them। ठीक है, तो एक डिफेक्टिव बोट में, एक मतलब रिकेटी बोट टेक्स्ट में बताया जा रही है, एक रिकेटी बोट में उनको भेज दिया गया सी में कि जो है वहीं पर हो जाए। नाउ दे आर इन ग्रेट डेंजर बिकॉज एनी टाइम एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट में occur, बट गोंसालो इज द ओनली मैन हु सेव्ड देम। ठीक है, वही गोंसालो जो किंग के काउंसिलर थे, तो गोंसालो सेव्ड देम। And Prospero confesses to Miranda that yes, he is the creator of the storm and it is actually a way of revenge। ठीक है, ये बाद में भी Prospero बता रहे हैं कि it is the way of revenge। Prospero just try to take revenge on all the conspirators। तो उन्होंने deliberately storm को arise किया। And Miranda feels very happy and very grateful to Gonzalo who saved them। Sorry, who saved them। तो मिरांडा wishes to meet गोंसालो फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरनैचुरल मशीनरी इन द प्ले अपीयर्स, दैट इज एरियल। ठीक है, एरियल का नाम हमने पढ़ा था रेप ऑफ द लॉक में भी। एरियल वाज द मेन सिल्फ और द गार्जियन सिल्फ। ठीक है, तो जो बाकी सिल्फ को कंट्रोल कर रहे थे रिगार्डिंग बेलिंडास चेस्टिटी एंड ऑल दिस थिंग्स, तो एरियल का मेंशन यहाँ पर भी है। तो प्रॉस्पेरो समॉन्स एरियल एंड एरियल इज एक्चुअली अ स्पिरिट।
So Ariel assures that no one will be injured in the storm. It is just an illusion. तो प्रोस्पेरो जस्ट वांट्स टू टीच देम अ लेसन. ठीक है, तो ये एक टाइप का मतलब ट्रेलर था. बाकी पनिशमेंट तो बाद में है, ये ट्रेलर था. तो प्रोस्पेरो एरियल को ये पूछ रहा है कि स्टॉर्म को एक ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करो ताकि लोगों का कोई भी मतलब कोई भी मर ना जाए स्टॉर्म. तो एरियल एश्योर्स दैट नो nobody will be injured in the storm, everyone will be safe, but it is just a kind of jolt to their simple and not simple exactly, their life of conspiracy. It is a kind of jolt. ठीक है, एक warning. So and the tempest is actually just an illusion because it is created by magic. ठीक है, तो ये ओरिजिनल टेम्पेस्ट नहीं है, ये एक मैजिकल इल्यूशन है. ठीक है, जैसे लेजर लाइट के थ्रू हम देखते हैं ना बहुत कुछ चीजें, वैसे ही है. इट इज ए काइंड ऑफ इल्यूशन जो मतलब ओरिजिनली नहीं होता है बट वो दिखाए जाते हैं. तो it is just an illusion. Ariel is assuring him that you can see the storm and you can realize it is an illusion, but they cannot realize that it is an illusion. ठीक है, तो इस टाइप से बनाया गया है. द सेलर्स रिटर्न थिंकिंग दैट अलोन्सो इज डेड. नाउ अब टेम्पेस्ट के बाद क्या होता है, जब शिप ब्रेक हो जाते हैं तो कई सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं. एलोन्सो सॉरी एंटोनियो एंड सेबेस्टियन अलोन्सो के साथ भाग रहे हैं. सो द अदर सेलर्स दे थिंक दैट अलोन्सो इज ऑलरेडी डेड. एरियल रिक्वेस्ट प्रोस्पेरो टू रिड्यूस हिज ड्यूटी आवर. तो बेसिकली प्रोस्पेरो जब ये आइलैंड में आए थे, एरियल बिकम्स हिज सर्वेंट. एंड इसके पीछे एक स्टोरी है कि एरियल को कैसे प्रोस्पेरो अपने सर्वेंट बनाया था. एंड एरियल रिक्वेस्ट दैट आई एम वर्किंग सो मच फॉर यू, सो प्लीज रिड्यूस माय ड्यूटी आवर एंड लिबरेट मी. So then Prospero reminds Ariel that how he has liberated him. तो एरियल का पास्ट स्टोरी क्या है? Before Prospero's arrival, the island was ruled by a witch named Sycorax. ठीक है, and Ariel worked as a servant, Sycorax's servant, but Sycorax was very cruel. ठीक है, तो one day what happened that out of anger, out of jealousy, Sycorax imprisoned Ariel in a tree and then she moved away. So from that time, for a long time, Ariel was imprisoned in a tree, and Prospero is the person who has liberated him, who has rescued him. तो एरियल आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आई विल सर्व यू बिकॉज यू आर माई लाइफ गिवर. ठीक है, तो प्रॉस्पेरो उसके स्टोरी उनको रिमाइंड करवा रहे हैं कि एरियल का ये हाल था, अगर प्रॉस्पेरो नहीं आते तो वो हमेशा उस पेड़ के अंदर बंद रहता. ठीक है, so Prospero rescued him. Now Prospero summoned Sycorax's son Caliban. The another important character appears, Caliban, and Caliban is a very peculiar character. He is half human, half animal kind of image or a character. Caliban says that he is the rightful owner of the island. यही से post colonial reading आते हैं, हम बाद में इसको करेंगे after doing the plot summary. So Caliban says that he is the rightful owner of the island and he curses Prospero continuously. Because Caliban believes that Sycorax को छोड़कर Prospero ने deliberately इस island को अपने कब्जे में ले लिया है and वो Caliban को ill treat कर रहे हैं, but Caliban should be the king of the island. ठीक है, Prospero also curses Caliban as he tries to rape Miranda. Caliban is a savage, almost animal-like person. ठीक है, primitive person. So Caliban is trying to rape Miranda and Prospero is very much angry with him. So Miranda says that she teaches him language so that he can come out of savagery. मिरांडा ने ही उनको civilized बनाने की कोशिश की and वो मिरांडा को ही रेप करने की कोशिश कर रहे हैं. So Miranda is also very dissatisfied with Caliban because he has no gratitude. ठीक है, now what happens? Ariel sings a haunting song to Alonso's son Ferdinand. Okay, Ariel sings a haunting song to Alonso's son Ferdinand. Ferdinand is deceived that his father is already dead. तो एलोन्सो का जो सन है वो है फर्डिनांड एंड फर्डिनांड एक दूसरे जगह पर वो चले गए हैं ड्यू टू दैट ब्रेकिंग ऑफ द शिप एंड फर्डिनांड इज बिलीविंग दैट हिज फादर इज ऑलरेडी डेड. ठीक है, नाउ मिरांडा मीट्स फर्डिनांड एंड गेट्स एन्चेंटेड बाय हिज ब्यूटी. फर्डिनांड इज अ वेरी गुड लुकिंग यंग मैन.
So Miranda gets enchanted by his beauty and Ferdinand tells her about his trouble. अपने जो हेल्पलेस कंडीशन है फर्डिनांड का वो मिरांडा को बता रहे हैं. प्रॉस्पेरो इज प्लीज टू सी देयर इंटरेक्शन. प्रॉस्पेरो बाहर से देख रहे हैं कि मिरांडा एंड फर्डिनांड दे आर इंटरेक्टिंग एंड दिस appears to be very pleasant. And Prospero realizes that both of them have fallen in love with each other. So to test Ferdinand's love, he imprisons Ferdinand. Deliberately Prospero उनको imprison कर रहे हैं ये टेस्ट करने के लिए कि मिरांडा को वो कितना प्यार करते हैं, right? So to test the power of love, he imprisons Ferdinand. Miranda cries not to treat him too harshly. ठीक है, मिरांडा इज वेरी शॉक्ड टू सी दैट प्रॉस्पेरो हैज इम्प्रिजन्ड फर्डिनांड. बट उसके पीछे प्रॉस्पेरो का एक पर्पस था. प्रॉस्पेरो टेक्स हिम अवे इग्नोरिंग मिरांडास अपील. नाउ एक्ट 2 सीन 1 पे हम आते हैं. एक्ट 1 कंप्लीट हो गया. नाउ एक्ट 2 सीन 1. एक्ट 2 सीन 1 में क्या है? एक्ट 2 सीन 1 में हम फिर से वापस जा रहे हैं वही स्टोरी में, एलोन्सो एंड उनके जो टीम का स्टोरी. ठीक है, तो एलोन्सो इज नॉट डेड एक्चुअली. ठीक है, एलोन्सो इज नॉट डेड. एलोन्सो इज एंक्शियस फॉर नॉट फाइंडिंग हिज सन. Ferdinand is thinking that Alonso is dead and Alonso is also thinking that Ferdinand is dead. ठीक है, now Gonzalo comes and consoles him because he is very much confused and sad for not finding his own son. Now Alonso's brother Sebastian blames him for the death of his nephew. वो उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं कि you have not taken care of him properly, so he is already dead. Now Gonzalo delivers a speech on ideal kingship. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. जब Gonzalo, the counselor of the king, he talks about the ideal kingship. Ariel enters and makes everyone sleepy. Ariel is always invisible, so Ariel फिर से एक charm create करते हैं. And Antonio says that Alonso's death would make him the next king. ठीक है, तो एंटोनियो का ये मानना है कि अगर एलोन्सो नहीं रहे दुनिया में तो ही विल बी द नेक्स्ट किंग. तो एंटोनियो ट्राइज टू और प्लान्स टू किल एलोन्सो एंड सेबास्टियन आल्सो एग्रीज टू हेल्प हिम. ठीक है, so Ariel listens to their plan and Ariel gives a warning to Gonzalo that a murder is going to happen. So the murder is not possible actually. Gonzalo awakes Alonso and they catch the conspirators. तो फाइनली उनको पकड़ लिया था जो एलोन्सो को मारने की कोशिश कर रहे हैं. गुड इवनिंग सुदेश, वेलकम. ठीक है, देन एक्ट 2 सीन 2 में हम आते हैं. एक्ट 2 सीन 2 में क्या है, इसी से हम क्लास को एंड करेंगे. एक्ट 2 सीन 2, again we will meet Caliban and Prospero. Caliban enters and curses Prospero. Caliban is doing the job of a servant. ठीक है, एंड वो Prospero को मतलब कर्स कर रहे हैं. नाउ यहाँ पर एक कॉमिक दो कैरेक्टर्स आते हैं, स्टीफानो एंड ट्रिंकुलो. Alonso's jester Trinculo appears. Now when Trinculo appears, Caliban mistakes him as one of Prospero's spirits. So Caliban feels very much afraid of him. Now then another character appears जिसका नाम है Stefano. He is also a comic character. So and Trinculo is very much afraid seeing Caliban because Caliban का चेहरा तो बहुत ही frightening है, half animal, half human, and hides himself under a cloak. Trinculo is a very coward man. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही कॉमिक एक सीन है कि स्टीफानो सिंग्स वेरी बैडली एंड ट्रिंकुलो इज अफ्रेड अगेन. ट्रिंकुलो बहुत छोटे मोटे बातों पर वो डर जाते हैं. ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम गेट्स ड्रंक इन द आइलैंड. नाउ कैलिबन इज वेरी मच एक्साइटेड टू टच वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज उनको ये सब नहीं पता था. एंड कैलिबन फील्स ऑल द मोर एक्साइटेड and in the drunken condition he claims that the creator of wine is God. ठीक है, ये जो मतलब मैंने पी लिया वो तो एकदम भगवान की तरह है. ठीक है, so he is so much excited. He is thanking God for creating such a beautiful drink like wine. ठीक है, now when Stefano and Trinculo appears, Caliban realizes that they are new in the island. So Caliban in a drunken condition declares that I will be your tour guide and I will see you the whole island. ठीक है, हरियाणा में टीजीटी का स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा, सिलेबस कोई फिक्स नहीं है. सिलेबस कोई फिक्स नहीं है. अच्छा,
हाँ, तो आप नेट के सिलेबस को ही फॉलो कर सकते हो। यस, एब्सोल्युटली, यू कैन वॉच द वीडियोस ऑन ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर एंड टीजीटी में आई थिंक इंडिया लिटरेचर से भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो मैं केवीएस टीजीटी पीजीटी की बात कर रही हूँ, उसमें इंडियन लिटरेचर भी आई थिंक आते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश एंड नॉन ब्रिटिश को आप पढ़ के जाओ, आई थिंक यू कैन डू। ठीक है, अगर सिलेबस नहीं दिया है तो ये प्रॉब्लम की ही बात है। बट यस, यू कैन रीड ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंड ऑल्सो इंडियन लिटरेचर। यस, एब्सोल्युटली। गुड इवनिंग एलिना, वेलकम। तो ही थिंक्स, अच्छा, तो कमिंग बैक टू द प्लॉट, कैलिबन एग्रीज टू बी द टूर गाइड ऑफ देम इन द आइलैंड। ही थिंक्स दैट स्टीफानो कैन लिबरेट हिम फ्रॉम द क्लच ऑफ प्रॉस्पर। ठीक है, सो ही सपोर्ट स्टीफानो। कैलिबन एक दूसरा प्लान सोच रहे हैं। ठीक है, वो स्टीफानो को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं टू लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लच ऑफ प्रॉस्पेरो, फ्रॉम दिस सर्वेंट लाइक लाइफस्टाइल। नाउ स्टीफानो थिंक्स ऑफ बिकमिंग अ रूलर ऑफ द आइलैंड। ठीक है, तो इससे एंड होता है आपका एक्ट 2 सीन 2। ठीक है, तो बस आज का क्लास इतना ही था। कल तो आपकी एग्जाम है। ठीक है, तो एज यू विल गिव एग्जाम ऑन टुमारो 13 अक्टूबर, तो कल की क्लास मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज कल आपकी एग्जाम है, तो कल आप क्लास नहीं कर पाओगे। तो टुमारो नो क्लास, वी विल अगेन मीट ऑन थर्सडे। ठीक है, हम डायरेक्टली मीट करेंगे थर्सडे सेम टाइम में। तो कल की क्लास में ऑफ कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि कल आपका एग्जाम है, एंड एग्जाम खत्म होने के बाद आप अपने घर वापस आओगे, उसके बाद फिर से हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप ऑल ऑफ यू विल गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो जो भी कल नेट एग्जाम देने जा रहे हो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो कल आप एग्जाम देकर आओ, टेलीग्राम चैनल में बताना कैसा पेपर था। ठीक है, आई विल ऑल्सो गिव एन एनालिसिस ऑफ द पेपर। जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा देन आई विल डेफिनेटली गिव एन एनालिसिस। तो कल की क्लास में नहीं ले रही हूँ, वी विल डायरेक्टली मीट ऑन थर्सडे एट 8:30 PM। ठीक है, एंड थर्सडे हम ये टेम्पेस्ट का जो रिमेनिंग समरी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्पेस्ट प्लॉट समरी पार्ट 2 वी विल डू एट थर्सडे एट 8:30 PM. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all Thursday at 8:30 PM and all the very best for your exam tomorrow.